Very good evening. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So today we will discuss about the problem-centered classroom and problem-based learning. What is the meaning of problem-centered classroom and problem-based learning? So, problem-based learning is an instructional approach that promotes active learning through problem solving and real-world scenario. Problem-based learning कहले आमे गोटे बुझिए कि एटा गोटे होची instructional approach या learning process गोटे. It promotes active learning through problem solving and real world scenario. Means आमरो जो 21st century रे different kinds of problems रहुची ताको आमे केमिति solve करिबा real world scenario रे तो सेटा होची problem based learning. तो सेही हिसाब रे जेमति कि आमे गोटे मैथ आमे गोटे पिला को दोचे कैलकुलेशन करिया को दोचे गोटे प्रॉब्लम दोचे से सॉल्व करछंती तो सेटा आमे कोइ दोचे कि सेटा होची मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग जदि सेटा गोटे वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हबो तो आउ गोटे होची जेमति के पिलारो किछि रियल लाइफ रे किछि गोटे तार प्रॉब्लम्स हेची तो से प्रॉब्लम्स को केमिति ताऊ सॉल्व करिवो से सिचुएशन को केमिति इरेडिकेट करिवो ता पाखरे सेही टाइप रो लर्निंग थिले से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करि परिबो तो इन a problem centered classroom students work collaboratively in groups with the guidance of a facilitator using problems or case studies as a foundation for their learning. तो problem centered classroom रे आमे देखिबा कोन ना students work collaboratively in a group गोटे group रे students सब collaboration हिसाब रे से माने काम करिवे with the guidance of facilitator or teacher or supporter using problems किछि गोटे में problems दे देबा कि किछि गोटे में case studies दे देबा तांको learning रे this method align with constructivist principles emphasizing student engagement inquiry and the development of critical thinking skills तो ए जो मेथड अच्छे मेथड टे बेसी का से तो फॉलो करूची का से तो अलाइन करूची ना कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल्स जदि तुम मैंने जदि बीएड करिथिबो तले तुम मैंने जानिथिबो कि 5P अप्रोच कोन 5P मेथड हमरो मे बी एमए एजुकेशन रे अछि जदि हमरो थाय टीचिंग पांचटा लेसन प्लान जाय कि स्कूल रे दबार जदि तुम मैंने देथिबो ताले तुम मैंने जानिथिबो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कोन अछि आ ता भितरे 5P मेथड अछि ओके तो से 5P मेथड रे भी हमरो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड गोटे अछि तो एम्फसाइजिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट आमे तंको डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज दे के स्टूडेंट को एंगेज करूचे इंक्वायरी एंड द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल then key features of problem based learning what are the features of problem based learning kon tar characteristic natures and features अछि ना first होची identify a relevant problem जदि गोटे मन करो problem based learning रे गोटे छुआर गोटे problems अछि से केमिति जानियो जे मोर problem अछि मु ता केमिति फाइंड आउट करी कि तार सॉल्यूशन बाहर करबी ता केमिति सॉल्व करबी तो फर्स्ट से कौन करिवो ना आइडेंटिफाइंग ए रिलेवेंट प्रॉब्लम फर्स्ट से तार कौन प्रॉब्लम्स अच्छी सेटा फर्स्ट आइडेंटिफाई करिवो द प्रॉब्लम शुड बी एप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट्स एंड कनेक्टेड टू देयर रियल लाइफ एक्सपीरियंस ensuring authenticity and meaningful learning तो से को कहले ना प्रॉब्लम शुड बी एप्रोप्रिएट ऑफ स्टूडेंट माने स्टूडेंट
प्रति सेटा गोटे एप्रोप्रिएट थिबो जो प्रॉब्लम टा जहा पई दरकार से प्रॉब्लम टा थिबो and connected to their real life experience सेटा पुनी कोन कनेक्टेड हेथिबो तार रियल लाइफ एक्सपीरियंस रे पुनी से प्रॉब्लम टा ऑथेंटिसिटी भी थिबो ता फलरे से कोन होबो ना से मीनिंगफुल लर्निंग लर्न करिवो then contextual learning the problem should be set in a context relevant to the student's world enhancing its capability applicability and engagement contextual learning means को context रे से प्रॉब्लम टा कुहा हेची ठीक अछि तो the problem should be set in a context relevant हेतिबा दरकार students world रो कि ता स्टूडेंट रो सराउंडिंग रे ही से प्रॉब्लम टा थिबा दरकार एनहांसिंग इट्स एप्लीकेबिलिटी एंड एंगेजमेंट देन इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग subject matter should be organized around the subject matter should be organized around the problem rather than strictly adhering to disciplinary boundaries interdisciplinary learning means कोन ना subject matter should be organized around the problem जहाँ भी किछि प्रॉब्लम्स होचे से सब्जेक्ट मैटर भितरे ही थिबो ना कि सेटा अलगा डिसिप्लिन बाहरु थिबो तो पिला सेटा करि परिबोनी ता सब्जेक्ट मैटर जोटा अछि सेटा ही से करि परिबो then student autonomy learners take responsibility for defining their learning path and planning solution to the problems learners जो हो कि बस students हो से कोन करिवो से responsibility नबो कि से प्रॉब्लम टा केमिति सॉल्यूशन बाहर करिवो तो he or should take responsibility for defining their learning path से माने निजे तांकर learning path से माने चूज करिवे and planning solution to the problems को केमिति solution बाहर करिवे तार प्लान करिवे then collaborative learning students work in learning team sharing knowledge and strategies to solve problems effectively जदि ग्रुप रे किछि कोलैबोरेशन हिसाब रे किछि तांको काम दिया होचे प्रॉब्लम सॉल्व करिया को दिया होचे देन से माने गोटे ग्रुप करिकि एज अ टीम हिसाब रे से माने गोटे काम करिवे देन शेयरिंग नॉलेज से माने परस्पर भितरे निजर नॉलेज शेयर करिवे एंड स्ट्रेटजीज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली कोन से माने मेथड कि को अप्रोचेस से माने यूज करिवे से प्रॉब्लम्स टा को सॉल्व करिया पे then performance based assessment students demonstrate their learning through tangible products or presentations showcasing their understanding and problem solving abilities तापरे कोन करियो स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट करिवे तांकर लर्निंग रे कि तांकर कोन tangible products अछि प्रेजेंटेशन हिसाब रे कि showcasing their understanding and problem solving abilities so these are the features of problem based learning then benefits of problem based learning या आमे त कहि परिबा कि कोन तारो एडवांटेजेस अछि मेरिट्स अछि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग रो जदि जनक पाखरे प्रॉब्लम बेस्ड या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज अछि देन तारो कोन कोन को स्किल तारो डेवलपमेंट होची को एरिया रे तारो एनहांसेस प्रमोट करूची से जिंस देखिबा तो फर्स्ट होची एनहांसेस क्रिटिकल थिंकिंग तारो फर्स्ट होबो कोन एनहांसेस क्रिटिकल थिंकिंग तारो डेवलपमेंट होबो engaging with problems help student develop analytical and evaluative skills then next होची encourages active learning से सबुथेरे active learning active engagement active participation in learning process से सबुथेरे active participation रहइबो को केबे भी पैसिव रहइबोनी सब बेले से चाहिबो कि मो एक्टिव रहिबे then integrates multiple concept ता पाखरे सब बेले different multiple concept ता पाखरे क्रिएट होथबा गोटे प्रॉब्लम्स पई ता प्रॉब्लम सॉल्व करिया को गले से तीन चारटा तार सॉल्यूशन बाहर कर देथिबो तो हेल्प स्टूडेंट्स सी कनेक्शन बिटवीन वेरियस सब्जेक्ट्स increasing the relevance of learning then boost motivation and engagement real world application enhances students interest and commitment जदि रियल वर्ल्ड रे किछ गोटे प्रॉब्लम्स आसुची तो पिला को बेसी इंटरेस्ट होची कि हां से केमिति तारो सॉल्व करिवो से प्रॉब्लम्स टा को केमिति सॉल्व करिवो एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एनहांस केमिति होची ना स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट देन फॉस्टर्स टीम वर्क एंड कोऑपरेशन जदि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग आमे गोटे टीम वर्क या कोलैबोरेशन हिसाब रे तांको देबा काम करिया पे ताले सेठी कोन तांकर टीम वर्क गोटे वर्क एथिक्स गोटे तांकर डेवलपमेंट होबो देन कोऑपरेशन तांकर क्रिएट होबो देन कोलैबोरेशन इज एसेंशियल प्रमोटिंग सोशल स्किल कम्युनिकेशन एंड शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी देन डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स
भी तांकर डेवलप हम जमती कि प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रियल वर्ल्ड challenges by equipping them with practical decision making abilities. Then enhances employability. Employers seek individuals with strong problem solving, teamwork, and critical thinking skill. Then cooperative learning in problem based classroom. तापर हम देखिबा कि problem based classroom रे cooperative learning केमिति help करूचे. Now cooperative learning is a key element in problem based learning. It involves small groups of students working together to achieve common learning objectives. कोऑपरेटिव लर्निंग रे कौन होची ना केते गुडे स्टूडेंट को नेकी स्मॉल ग्रुप करा हबो जेंति कि गोटे क्लास रे 50 स्टूडेंट अछंती तो आमे 5 करके गोटे गोटे ग्रुप कर दे गोटे स्मॉल ग्रुप आमे कर देबा जा फले कि तांकर जो कॉमन लर्निंग अचीव ऑब्जेक्टिव्स अछि कि आउटकम्स अछि सेटा अचीव हे पारिबो दिस अप्रोच फॉस्टर म्यूचुअल लर्निंग बेनिफिट्स तो ये जदि आमे कोऑपरेटिव लर्निंग आमे यूज करबा ताहले कोन सेठी फॉर डेवलपमेंट हबो ना फॉस्टर्स mutual learning benefits of enhances engagement among students then and develop social skill necessary for success beyond the classroom. Then why you use cooperative learning ame kahi ki cooperative learning use kariba classroom re cooperative learning offers several advantage over competitive and individualistic learning approach. तो कॉम्पिटिटिव रे भी होची जेमति कि हमें ग्रुप डिस्कशन हेगला जीडी होची इंडिविजुअल भी होची ओके तो इंडिविजुअलिस्टिक लर्निंग अप्रोच हायर अचीवमेंट एंड प्रोडक्टिविटी पाई रिसर्च शोज दैट कोऑपरेशन लीड्स टू बेटर एकेडमिक आउटकम्स जदि हमें कोऑपरेशन हिसाब रे कि कोऑपरेटिव लर्निंग हिसाब रे हमें पाठ पढिबा देन बेसी हमरो एकेडमिक आउटकम्स जोटा अछि सेटा बेटर होबो तो हायर अचीवमेंट एंड प्रोडक्टिविटी. Supportive relationships. Students develop strong interpersonal connection, fostering a sense of community. तो supportive relationship भी development होगा, interpersonal connection develop होगा, then fostering a sense of community. सीटा भी हमारा development होगा. Then improved psychological health. Psychological health like cooperation promotes self-esteem, social competency, and overall well-being. Then components of cooperative learning. Different types of elements of cooperative learning are positive interdependence. Each group's member success is linked to the success of others, creating a shared sense of responsibility. So तार first होची positive interdependence रे कौन रहबो ना each group members success is linked to the success of others. जदि गोटे ग्रुप रे जो मेंबर्स माने अछंती तांकर जदि जनकर सक्सेस होची से ग्रुप रे तो ताहले जदि मेंबर्स रो जनकर सक्सेस होची तो ताहले सब माने से ग्रुप रे जते जन अछंती समस्तकर सक्सेस होची तो क्रिएटिंग ए शेयर्ड सेंस ऑफ रेस्पोंसिबिलिटी सेठी गोटे रेस्पोंस सेंस ऑफ रेस्पोंसिबिलिटी तांकर गोटे क्रिएट होची ओके तो मन कर क्लासरूम रे 5टा ग्रुप करा हेची ए बी सी डी जदि बी वाला पूरा तार एकेडमिक रे से सक्सेस हेची कि गोटे किछि पार्टिसिपेट करा होची किछि गोटे प्रोग्राम हेची सेथे से माने जीडी करूछंती तो से ग्रुप रे समस्ते तो कुहंती किंतु से ग्रुप रे जे जणे थिबो से जदि पूरा प्रॉपर वे रे कहूची ताहले से ग्रुप टा विन करूची जदि से विन करूची माने टोटल से ग्रुप रे जते मेंबर्स अछंती समस्ते विन करूछंती. Okay, so that is sense of responsibility. Then face-to-face interaction, students engage in a meaningful discussion. Face-to-face interaction भी होची cooperative learning रे जेमति कि किछि meaningful discussion हेगला explanation हैला and problem solving activities. Individual and group accountability. Each student is accountable for their contribution, ensuring equitable participation. तो इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी भी हमरो क्रिएट होची ये आइदर हमें कहि परबा ईच स्टूडेंट भी हो सिंगल स्टूडेंट हो किबा सेटा ग्रुप स्टूडेंट भी हो तो इंटरपर्सनल एंड ग्रुप स्किल्स सच एज लीडरशिप decision making trust building and conflict resolution must be explicitly taught and practiced
तो हमर इंटरपर्सनल एंड ग्रुप स्किल रे भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल अछि जेमति कि लीडरशिप स्किल हे गला डिसीजन मेकिंग स्किल हैला ट्रस्ट बिल्डिंग हैला कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हैला तो ग्रुप जदी करा होची ग्रुप रे ग्रुप जदी करा हैला तो सेथरे कोन समस्त ये लीडरशिप न छथि ना जणे ही लीडरशिप नबो आउ डिसीजन मेकिंग से जणे ही करिवो किंतु समस्त किछि ना किछि आइडिया शेयर करिवे तो जणे ही सेटा को डिस्कस करिके से माने डिसीजन मेकिंग करिवे से माने को परस्पर को भीतर मेंबर्स माने को भीतर ट्रस्ट बिल्डिंग थिबो एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन थिबो से माने को भीतर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होनो थिबो ओके then group processing groups reflect on their collaboration to identify strength and areas for improvement तापरे को देखिया कोन ना ग्रुप्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर कोलैबोरेशन टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ से माने तांकर जो स्ट्रेंथ अछि से माने आइडेंटिफाई करिवे एंड एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट तांकर जो एरिया रे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अछि ताकू आइडेंटिफाई करिकि जो एरिया रे तांकर वीकनेस अछि सेथिरे से माने इंप्रूवमेंट चाहिबे then cooperative learning enhances student learning by तो कोऑपरेटिव लर्निंग कोन एनहांस करूचे स्टूडेंट लर्निंग रे केमिति एटा यूजफुल होचे स्टूडेंट्स मानक पय ना फर्स्ट होचे कि प्रोवाइडिंग ए शेयर्ड एंड कॉग्निटिव set of information between students providing a shared cognitive set of information cognitive development जेमति कि हमरो हमें कोइ परिबा नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस इवैल्यूएशन ए जो हमरो सब जो अछि तर एलिमेंट्स गुरा को अछि तो cognitive set of information between students then motivating students to learn the material तापरे कोन होची हमरो मोटिवेशन क्रिएट होची then ensuring that students construct their own knowledge जदि कोऑपरेटिव लर्निंग करा हला तो किछ गोटे टास्क दिया है ग्रुप रे तो सेठी स्टूडेंट्स कोन करिवो ना तार कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज सेठी तार ओन नॉलेज तार कंस्ट्रक्ट करिवो देन प्रोवाइडिंग फॉर्मेटिव फीडबैक तापरे से फॉर्मेटिव फीडबैक ताको मिलिवो फ्रॉम द टीचर साइड टीचर या गाइड हैला कि फैसिलिटेटर हैला ताको से फॉर्मेटिव फीडबैक दबो देन डेवलपिंग सोशल एंड ग्रुप स्किल्स जोटे कि कहला कि तांको भितर ट्रस्ट बिल्ड करिबा कि तांका पाखरे सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी हे गला एई सब तांकर जो स्किल लीडरशिप स्किल ए सब स्किल गुडा को तांकर डेवलपिंग हबो नेसेसरी फॉर सक्सेस आउटसाइड द क्लासरूम केवल जे इनसाइड द क्लासरूम से जिंस नो से जिंसटा आउटसाइड द क्लासरूम भी से माने यूज करि पाइबे देन प्रमोटिंग पॉजिटिव इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स तापरे कोन जदि कोऑपरेटिव लर्निंग हिसाब रे से माने काम करिवे गोटे ग्रुप रे तो डिफरेंट मेंबर्स थांती एमती कि डिफरेंट बैकग्राउंड रो डिफरेंट कल्चर डिफरेंट रिलीजियन सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप तो समस्ते थिबे ना कि गोटे रिलीजन रो थिबे कि गोटे बैकग्राउंड रो थिबे ना तो डिफरेंट बैकग्राउंड रो डिफरेंट कल्चर रो थिबे तो सेमाने को भितर गोटे पॉजिटिव इंटरेक्शन क्रिएट हबो then grouping strategies in cooperative learning आमे grouping पाई group को strategies आमे follow करिबा the जेमति के different grouping strategy can be employed based on the lesson objectives pairs means आमे दि जण करिके भी करि परिबा study and share ideal for quick discussion and peer feedback then triads means तीन जण ऊपर भी आमे करि परिबा suitable for more complex tasks requiring varied perspective then force and five members भी हमें रखी परिबा effective for project and problem solving task फोर्स एंड फाइव मेंबर्स केते बेले रहबे ना जेते बेले किछि गोटे प्रोजेक्ट्स दिया हला कि किछि गोटे प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क दिया हला तो सेही टास्क को इफेक्टिव करिया पई चार जणिया पांच जणिया ग्रुप हमें करि परिबा ठीक अछि then grouping can be heterogeneous or homogeneous grouping can be heterogeneous भी हे परिबो homogeneous भी हे परिबो तो selection groups may be selected at random or be criteria based आमे ग्रुप को केमिति सिलेक्शन करिबा फर्स्ट तो सिलेक्शन होबा केमिति सिलेक्ट करिबा आइदर आमे रैंडमली कर दबा जदी रोल नंबर थिबो 1 2 3 करी कि गोटे ग्रुप तापरे 4 5 6 गोटे ग्रुप कर दबा नहले क्राइटेरिया बेस्ड कर दबा जदी किछि गोटे हम पाखरे प्रॉब्लम्स अछि से प्रॉब्लम्स रिलेटेड केतेटा प्रॉब्लम्स अछि जदी से प्रॉब्लम्स रिलेटेड आमे क्राइटेरिया बेस्ड करी कि कर दबा then sometimes the students like to work
Sometimes the students like to work in their own group are allowed to select their own group members. बेले बेले कोड हुए ना स्टूडेंट्स माने भाबंती कि ना आमे निजो ग्रुप माने तांकर जेते बेले जो ग्रुप टे थाए फ्रेंड सर्कल थाए से माने भाबन पीयर ग्रुप्स थाए से माने भाबंती कि आमे आमो ग्रुप रे काम करबाटा बेसी हमको भल लागे तो जदि से माने से ग्रुप रे कंफर्टेबल देन ताको अलाउ कर दबा टू सिलेक्ट देयर ओन ग्रुप्स मेंबर देन ग्रुप रिवार्ड्स तापर सिलेक्शन हे गला ग्रुप को हम सिलेक्ट कर देले तापर आमे ग्रुप रे जो माने भलो काम करले तांको हम किछि ना किछि रिवार्ड्स देबा वन ऑफ द कीज टू सक्सेसफुल ग्रुप लर्निंग्स is the use of group rewards. Teachers use quizzes, team games, and class tournaments, but these become competitive. Rewarding the entire groups, pairs, triads, and or fours breaks intra-group rivalry. Every group works to get a part on the back for everyone. तो rewarding जोटा दिया हबो ग्रुप रे जेते जण अछंती समस्तन को मिलिबो ना कि जण को मिलिबो देन टाइम भी हमें देखिबा कोन रहइबो ना नो ग्रुप वर्क शुड बी अलाउड टू गो on indefinitely. Every group learning exercise must have a definite time limit 5 minutes 10 15 or 20 minutes depending on the objective of the lesson. If not timed, interest begin to flag, group disintegrated, and the lesson lose impetus. Impetus, हाँ तो से कहले कौन ना टाइम रे हबो कोन आम गोटे पर्टिकुलर गोटे टाइम पीरियड रखिया को पड़िबो कि एई टाइम रे तुमे करिवो तो आइदर हमें ताको 5 मिनिट्स 10 15 या 20 मिनिट्स भी दे परिबा सेटा केमिति दबा ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन हमर जो टास्क अछि से टास्क हिसाब रे हमें ताको टाइम लिमिट दबा जदि हमर टाइम न दोचे ताहेले कोन हबा जो पिला मानकर इंटरेस्ट अछि से इंटरेस्ट जमा आसीबोनी से माने के हां टाइम तो दिया है जे आज न तो काली करिबा एथरे कोन अछि तो ग्रुप डिसइंटीग्रेटेड हे जिवे आ लेसन टे ठीक भाव रे जहा तार लर्निंग आउटकम्स अछि सेटा अचीव हे परिबो नाही देन इम्प्लीमेंटिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन क्लासरूम हम केमिति इम्प्लीमेंट करिवा कोऑपरेटिव लर्निंग को क्लासरूम फर्स्ट टाइम देखिबा कि ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव सेट करिबा define both academic and social learning goals then design the academic task जेहेतु आमे क्लासरूम पई करूचे तो फर्स्ट टाइम academic task आमे डिजाइन करिबा choose a suitable problem and determine the ideal group size then assign group तापरे आमे task बाछि देले तापरे हमरो ग्रुप भी असाइन हला from expert groups with specific roles and responsibility प्रत्येक ग्रुप को किसी न किसी roles and responsibility दिया हला then organize classroom and materials किसी न किसी तापरे हला कोन ना classroom को organize केमती करिबा then जहा material अछि resource material हला सेटा भी केमती हमें organize करिबा तो ensure student have the necessary resources explain task and success criteria तापरे हमें टास्क तो बाछि देइचे एकेडमिक टास्क हम डिजाइन कर देले तापरे पिला मानन को भी तो टास्क दबार अछि ना तो से टास्क विषय रे हमें एक्सप्लेन करिबा देन ताको केमिति से माने अचीव करिवे सक्सेस क्राइटेरिया ता ऊपर भी हमें सक्सेस क्राइटेरिया और हम कह परबा इवैल्यूएशन मेथड केमिति हमें इवैल्यूएट करिबा ता विषय भी हमें डिटेल्स रे कहिबा देन सुपरवाइज एक्सपर्ट ग्रुप केमिति सुपरवाइज ताको मॉनिटर करिवे इवैल्यूएट करिवे ता ऊपर भी हमें गाइडेंस दबा देन रीऑर्गेनाइज इनटू न्यू ग्रुप्स मिक्स स्टूडेंट फ्रॉम एक्सपर्ट ग्रुप्स टू शेयर नॉलेज जदि आउ किछि नुवा ग्रुप चाहउछंती जो पिला माने मने करो क्लास को आसिलेनी से दिन आउ गोटे दिन अलगा दिन आसिले तो से माने को भी किछि को ग्रुप रे हमें कोन करबा ना ऑर्गेनाइज कर दबा देन सपोर्ट ग्रुप वर्क ऑफर फीडबैक एंड असिस्टेंट as needed जदि ग्रुप वर्क के जदि चाहूची किछि सपोर्ट ताले से ताको सपोर्ट प्रोवाइड करा जिवो देन इवैल्यूएट ग्रुप वर्क ताको इवैल्यूएट करा जिवो ग्रुप वर्क को देन शेयर रिजल्ट allow students to present their findings and reflection जो टास्क दिया है छी से टास्क रे से माने सक्सेस है कि ताको रिजल्ट कोन हैला ताको शेयर करबा देन चैलेंजेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग तो फर्स्ट होची ग्रुप डायनामिक्स not all students are equally invested in the success of the group some may rely on others to do the work or fail to contribute effectively तो
or not all students are equally invested in the success of the group. समस्त चाहते नहीं कि हमें सक्सेस हवा बोले ग्रुप रे. Some may rely on others to do work or fail to contribute effectively. Teacher must carefully structure group and monitor progress to ensure equal participation. Okay. Then time management. Cooperative learning activities can be time consuming, requiring careful planning and facilitation to ensure that all students remain engaged and focused on task. टाइम मैनेजमेंट भी निहाती दरकार केमिति से को कोऑपरेटिव टास्क रे केते टाइम से माने खर्च करिवे तांकर केयरफुल प्लानिंग कोन अछि तांकर फैसिलिटेशन कोन अछि and focused on the task. Then assessment complexity, like PBL, problem-based learning, assessing cooperative learning is challenging. Teachers must evaluate both individual and group contribution, which requires clear criteria and effective monitoring. ଯେତେବେଳେ assessment ଆମେ କରିବା ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ challenges. Teacher must evaluate both individual and group contribution. टीचर बोथ देखिबार अछि इवैल्यूएट करिबार अछि कि ग्रुप कंट्रीब्यूशन कोन रहउछि एंड इंडिविजुअल से ग्रुप रे जो मेंबर्स माने अछथि तांकर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कोन रहउछि. Each requires clear criteria and effective monitoring. Then synergy between PBL या problem based learning and cooperative learning. While problem based learning and cooperative learning are distinct in their approaches, they share a common emphasis on collaboration and active student participation. The synergy between these two methods can lead to even more powerful learning experience. Collaboration in context. PBL provides a meaningful context for cooperative learning by tackling real-world problems in groups. Students engage in collaborative problem solving that mirrors the teamwork they will experience in their career. से point रे कौन कहला ना जो synergy between PBL and cooperative means कि PBL problem based learning and cooperative based learning रे कौन linkage अछि सेमानक भितर difference नै सेमानक भितर similarity के link कौन अछि ना collaboration जदि हमें term use करूचे cooperative रे भी collaboration दरकार and problem based learning रे भी cooperation दरकार. तो PBL provides meaningful context for cooperative learning. जदि हमें किछि गोटे problem based learning कले तो सेठी cooperative learning दरकार. तो कोऑपरेटिव लर्निंग जदि हमें कोलैबोरेटिव लर्निंग हमें जदि यूज करूची एंगेज इन कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट मिरर्स द टीम वर्क दे विल एक्सपीरियंस इन देयर careers. Then active learning, both methods emphasizes active learning. PBL रे भी active learning दरकार cooperative रे भी दरकार where students are responsible for their own learning while working together with peers. This fosters deeper engagement, critical thinking, and development of important life skills. Then integration of skill. PBL encourages the development of problem-solving skill, while cooperative learning focuses on collaboration and interpersonal skill. जदि हमें PBL कथा कहबा PBL encourages problem-based learning, encourages problem-solving skill. And cooperative learning focuses on collaboration and interpersonal skill. When combined, these approaches provide a comprehensive learning experience that prepares students for both academic and professional challenges. तो एटा थिला तुमरो यूनिट 11 रो जोटा कि अल्प थिला सेटा कहथिला नेक्स्ट क्लास रे कंटिन्यू कराबो. देन आज हम देखिबा मैनेजमेंट ऑफ एक्सटेंशन, कम्युनिटी सेंटर्ड एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज. Education is not merely about imparting knowledge but also about holistic development. Holistic development कथा एथि पई कहला ये यूनिट रे जेतु को-करिकुलर एक्टिविटीज ऐड अछि. तो एजुकेशन टे केवल जे गोटे नॉलेज आमे एक्विजिशन करिबा नॉलेज एक्वायर करिबा से जिंस नुह हमरो ऑल राउंड डेवलपमेंट भी होचे. महात्मा गांधी stated
By education, I mean an all-round drawing out of the best in child and man, body, mind, and spirit. This philosophy highlights the role of education in fostering intellectual, social, emotional growth in student. ओके जदि आम कह बॉडी माइंड एंड स्पिरिट तो बॉडी आमर क्या सहित कनेक्टेड रोचे बॉडीटा क्या सहित कनेक्टेड आमर ना बॉडी आमर कनेक्टेड रहा फिजिकली ओके जदि आम माइंड कथा कहबा तो आमर इंटेलेक्चुअल ता सहित कनेक्ट रोचे स्पिरिट आमर स्पिरिचुअल जोटा होची स्पिरिचुअल इमोशनल सेटा भी आम कहि परिबा तो ओके तो से कहला कि फॉस्टरिंग इंटेलेक्चुअल सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ इन स्टूडेंट Institution of higher learning plays a crucial role in national development by actively engaging with communities. Given the significant investment in higher education, institutions have a responsibility to contribute not only to academic advancement but also to societal well-being. So this discussion explored the significance planning, management of extension, community-centered co-curricular activities in educational institution. These activities contribute to comprehensive learning experience and establish a strong link between education and societal needs. तो यार learning outcomes कौन रहेबो ना analyze the importance of extension, community-centered and co-curricular activities in higher education institution. Then identify effective methods for planning and organizing these activities. Then recognize the skill required by educator to manage these activities efficiently. तो देखिए आम कम्युनिटी सेंटर्ड एक्सटेंशन इंपोर्टेंस ऑफ एक्सटेंशन एंड कम्युनिटी सेंटर्ड एक्टिविटीज कौन ना ट्रेडिशनली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज फोकस्ड on two primary functions, teaching and research. Traditionally आम देखा जदि कह ट्रेडिशनली कथा कह यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस रे फोकस का दीटा प्राइमरी फंक्शन पे कराउतला गोटे होची टीचिंग गोटे होची रिसर्च हाउएवर देयर रोल्स हैज इवॉल्व टू इंक्लूड कम्युनिटी एंगेजमेंट The UGC has recognized the importance of extension and community-centered activities as the third key function of higher education institution. Okay, तो first हमारा teaching and research केवल दीटा primary function थिला जोटा कि आगे यूज होतला ट्रेडिशनली किंतु वर्तमान हमर यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कला जे इंपोर्टेंस ऑफ एक्सटेंशन एंड कम्युनिटी सेंटर्ड एक्टिविटीज आल्सो इंपोर्टेंट एज द थर्ड की फंक्शंस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. Then definition and purpose re kon rahibo na extension refers to the process of working with communities to bring about social, economic, educational improvement. Extension माने होची कोन ना सेटा गोटे होची working with communities गोटे process जोटा कम्युनिटी सहित आम मिसी काम करूचे bring about social, economic and educational improvement. These activities should be self-sustaining and community-driven. Some of the key objectives include establishing strong connection between institution and communities. First होची आम देखिबा establishing strong connection between institution and communities. Means institution सहित communities या society रा कोन connection अछि सेटा को semane build करूछंदे. Then providing students with practical learning opportunities. जहाँ भी किसी आमे theoretical learning पढ़ुचे theoretical आमे जिनस जानुचे ताको केमिति आमे practically आमे लगेबा काम रे सेटा को भी पिला मानन को situation or opportunities provide कराउचे. Enhancing social responsibility and civics engagement, then addressing local problems through academic expertise and research-based intervention. Then benefits of extension activities, कौन कौन तार benefits अच्छी extension activities रो, ना community development हबो, extension activities aim to uplift the socio-economic condition of communities by addressing their challenges and enhancing quality of life. Then student enrichment होची
Engaging in real world problem helps students apply their theoretical knowledge practically, enhance their learning experience. Student जहाँ भी तार theoretical knowledge जानी से तार practical से knowledge को केमिति theoretical knowledge को केमिति से practically use करके से थ्रू केमिति learning experience create करिवो enhance करिवो knowledge भी हमरा transfer होची university serve as a knowledge hub where faculty and students can contribute to societal progress through research based intervention. Then mutual learning. Interaction between educational institution and communities fosters an exchange of knowledge benefiting both parties. Then social responsibility, such program instill a sense of civic duty and encourage students to contribute to national development. Next time देखिए resources for extension and community centered activities. कौन कौन resources हमरो यूज होची extension and community centered activities पाई तो फर्स्ट गोटे होची community resources जोटा को आमे कहबा कि natural resources local artisans educated unemployed youth माने educated अछंती किंतु से माने बेकारी अछंती unskilled professionals से माने होचंती community resources. Then institutional resources हमरो हबो कोन ना libraries laboratories research expertise and knowledge dissemination tool. Then planning and organizing extension and community centered activities. तापर हम देखिए कि कौन planning and extension and community centered activities को हमें केमिति plan and organize करूचे ना. फर्स्ट हो जी need assessment. फर्स्ट में कौन हमरो need अछि सेटा को फर्स्ट में assess करिबा. Conduct demographic survey to understand the socio-economic and cultural dynamics of the community. Then identify local problem and available resources. तापरे हमें देखिबा कोन हमरो local problem कोन अछि identify करिबा and available resources कोन अछि सेटा देखिया. Then engage with community leaders to ensure relevance and sustainability. तापरे हमें community leaders को सहित हमें engage दिबा to ensure relevancy and sustainability. Then step 2, preparation of resource inventory. कौन कौन रिसोर्स हमको दरकार को टूल दरकार तार हमें गोटे प्रिपरेशन करबा जोटे कि हमें पढ़थिले हमको दरकार कोन गोटे कम्युनिटी रिसोर्सेस गोटे इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेस. Then identify community resources such as local artisans, professionals and unemployed youth. Then next होची institutional resources like including faculty expertise laboratories and libraries. तापरे होची determine the feasibility of intervention based on available infrastructure. तापरे हम देखिबा identification activities कोन कोन हमें activities करिबा कोठी करिबा ना community needs माने activities केमिति करिबा ना community needs and institutional रो capacity को base करिके activities should align with the community needs and institutional capacities. They may include literary programs, health awareness campaign, then environmental sustainability initiatives and vocational training. Then forming teams step 4 रे कोन रहबो ना establish team comprising students, teacher and community members for planning, execution and monitoring. Forming teams माने कोन हमें टीम को हमें क्रिएट करिबा या फॉर्म करिबा केमिति करिबा के ता भितरे मेंबर्स रहबे ना comprising student रहबे, teachers रहबे, community members रहबे जे कि जे से टीम रो प्लान करिबे, एग्जीक्यूशन करिबे एंड मॉनिटर करिबे. Then define clear roles and responsibility for effective implementation. तापरे जहाँ भी किछि roles and responsibility अछि से टीम रो सेमन ताको डिफाइन करिबे कोन पाई ना effective implementation पाई. Then implementation and monitoring ensure active participation and engagement.
then monitor progress and make necessary adjustment, then document outcomes for future reference and policy improvement. तापर होची टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन एंड कम्युनिटी सेंटर्ड एक्टिविटीज को टाइप रो एक्सटेंशन एंड कम्युनिटी सेंटर्ड एक्टिविटीज अछि फर्स्ट होची फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इम्प्रूविंग सैनिटेशन माने को टाइप रा आमे काम करि परिबा एक्सटेंशन एंड कम्युनिटी सेंटर्ड रे ओके जेमति कि इम्प्रूविंग सैनिटेशन फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करि परिबा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज एंड रोड्स इन रूरल एरियाज जेमति कि कोन ना को एरिया रे जदि किछि गोटे पोखरी फोखरी अछि तो सेठी गोटे सैनिटेशन रो प्रॉब्लम्स अछि तो सेठी हमें सैनिटेशन इम्प्रूविंग करि परिबा वाटर फैसिलिटीज जदि नाही तो आमे छोट छोट माठिया रखी ता भीतर पानी रखी कि सेठी भी आमे तांको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज दे परिबा जदि रोड्स इन रूरल एरियाज रे रोड्स टिके खराब अछि तो सेठी भी आमे किछि बाली पके कि से रास्ता को टिके प्लेन कर दबा तो ए सब जिंस होची हमरो कम्युनिटी सेंटर्ड एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज तो एटा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भीतर आसीबो तो क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एंड अदर लीगल राइट्स तापरे हमें तांको बतेइबा जे कि हां तुमरो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट रे ए रूल्स रेगुलेशन अछि कि आउ किछि अलगा भी रूल्स एंड रेगुलेशन अछि जदि किछि गोटे सैनिटेशन रो फैसिलिटीज हो नाही गवर्नमेंट को से माने पठौ छथि गवर्नमेंट किछि करि पारे गवर्नमेंट तो छाडी दियो से तो बहुत दूर कथा कि से एरिया रो जे थिबो बीओ हेगला कि डीओ हेगला कि जे भी अच्छी कि कलेक्टर भी हो तो सेमान जदि से काम गुड़ाक न करूछथि तो सेमाने जदि सेमानको जानिथिबे कि हाँ आरटीआई एक्ट रे ए नियम अछि कि अदर लीगल राइट अछि तांको पई तो सेटा को से फॉलो करि परिबे देन लिटरेरी एंड सोशल अवेयरनेस कौन करेंगे ना कंडक्टिंग अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम जो मैंने पाठ पढ़ु ना कम बयस से छाड़ देते से मैरेज करने माने इच्छा होची पढ़िया पे किंतु तांको स्कोप मिलुनी तो सेमानक पई भी किछि हमें प्रोग्राम्स करि परिबा ऑर्गेनाइजिंग कैंपेन अगेंस्ट सोशल एबल लाइक डाउरी एंड चाइल्ड मैरेज कि आमे किछि गोटे जेंति कि जो सोसाइटी रे डिफरेंट टाइप्स रो सोशल एबल सिस्टम अच्छी डाउरी अच्छी चाइल्ड मैरेज अच्छी तो यही सब जिनस को आम केमती हटेबा भी आम कैंपेन ऑर्गेनाइज करबा अवेयरनेस क्रिएट करबा स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन राइट्स एंड ड्यूटी एज रिस्पांसिबल सिटीजन तापरे आम कहबा कि रेस्पॉन्सिबल सिटीजन पाई कौन राइट्स एंड ड्यूटीज अच्छी सेटा भी अवेयरनेस क्रिएट करबा जेमति कि भोटिंग टाइम रे भोट दबा से समस्त गोटे अधिकार ओके तो सेटा को जदि जदि पिला पिला हो किंबा लोक माने हुअंतु से जदि न जानि थिबे तो सेमानंकु भी आमे जणेबा कि एई तुमरो राइट्स एंड ड्यूटीज अछि एज ए सिटीजन हिसाब रे then cultural and artistic engagement organizing exhibition to promote local artisans ठीक अच्छे जे कि जदि से एरिया रे किछि माने भलो कि जदि किछि लोकल आर्टिसंस किछि अछि तो से एरिया को प्रमोट करिया पे किछि एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करबा देन होस्टिंग कल्चरल फेस्टिवल शोकेसिंग ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म देखियो प्रायतः गाँ मानकरे गोटे 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 वर्ष रे एमती गोटे गोटे तांकर थाए को दिन मानकरे कि किछि गोटे पर्व हुए जदि से माने किछि ना किछि नाटक करिवे कि किछि यात्रा करिवे कि मेला करिवे तो गोटे कल्चरल फेस्टिवल से माने करंती तो emergency and disaster relief providing aid during natural disaster like flood and earthquakes mobilizing resources for rehabilitation efforts तो यही सब activities गुरा को हमें कहिबा extension and community based activities community centered activities तो इम्पोर्टेंस ऑफ तापरे हमें देखिबा को करिकुलर एक्टिविटीज कोन अछि हमरो ना इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज co-curricular activities plays a crucial role in holistic education by complementing academic learning with practical experience these activities contribute to आमे तो curricular activities आमे करूचे आमे academic काम करूचे किंतु हमको co-curricular भी दरकार हमरो holistic development पाई फर्स्ट होची स्किल डेवलपमेंट enhancing leadership
टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट केमती हम जदि आम कौन किसी गोटे पार्टिसिपेट करवा देन लीडरशिप एनहांस हम टीम वर्क डेवलप हम देन कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप हम देन इमोशनल ग्रोथ building self-confidence, resilience, and interpersonal skill. Then civic responsibility, encouraging students to participate in democratic process and community service. Then cultural awareness, promoting inclusivity and appreciation of diversity. Then types of co-curricular activities, co type of co-curricular activities आमे use करि परिबा. First होची physiological activities जोटे कि sports, athletic, yoga to enhance physical well-being. ओके डिग्री कॉलेज कथा तो मु जानी तांकर बोधे मे भी तांकर ये न थाए टाइम टेबल रे स्पोर्ट्स एथलेटिक योगा वगैरह न थाए किंतु आमे स्कूल कथा कोइ परिबा कि +2 लेवल रे भी आई थिंक न थाए किंतु जते बेले गोटे प्रोफेशनल कोर्स बीएड रे किबा एमएड रे आमे एडमिट करूचे तो गोटे तांकर गोटे फिजिकल एजुकेशन गोटे पीरियड तांकर रहुचे ओके तो से भलिया तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज से को स्पोर्ट्स करिया कुहा होची स्पोर्ट्स एथलेटिक एंड योगा टू एनहांस फिजिकल वेलबींग देन साइकोलॉजिकल एंड इंटरपर्सनल एक्टिविटीज कौन रहबो ना डिबेट हे गेला ड्रामेटिक्स हैला स्टूडेंट क्लब्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड टीम वर्क ए सब हमरो को करिकुलर एक्टिविटीज हमें करूचे निजे भी तुम मैंने देखि थिबो जते बेले हमरो किछि कंपटीशन होची डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करूचे हम So civics and social activities, student council and social service initiative to develop leadership skill. Civics activities केमती रहबो ना student council होची जोटा election आमे कहूचे सेटा हे गेला किछि social service आमे करबा social activities रे तो सेटा हे जिवो social activities. Then cultural and aesthetic activities केमती होची ना music, dance, art to foster creativity. Then disciplinary activities एनसीसी स्काउट एंड जोटा कि हमको डिसिप्लिन हमको सिखाउची एनसीसी स्काउट एंड गाइड्स एंड सेल्फ गवर्नेंस प्रोग्राम्स टू इंस्टिल डिसिप्लिन तबरे हला प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज हम केमिति प्लान एंड ऑर्गेनाइज करबा को करिकुलर एक्टिविटीज इन हायर एजुकेशन सिस्टम align activities with student interest and abilities first हमें देखिए रोची कि student रो interest and abilities कोथरे अछि को activities रे then clearly define objectives and expected outcomes तापर जो जो activities हमें करूचे से activities रो हमरो objectives कोन रहइबो and expected outcomes कोन रहइबो सेटा को भी हमें clearly define करिवार अछि then ensure equal participation opportunity for all students जहाँ भी हमें को करिकुलर एक्टिविटीज हमें ऑर्गेनाइज करूचे सेथरे इक्वल पार्टिसिपेशन करिवे से अपॉर्चुनिटी दिया जिवो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स सेठी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हबो नाही assign trained faculty to oversees each activities तापरे कोन करा हबो ना असाइन ट्रेंड फैकल्टी जे जो फील्ड रे ट्रेंड अछंती आर्ट रे जे ट्रेंड थिबे म्यूजिक रे जे ट्रेंड अछंती डांस रे स्पोर्ट्स रे एथलेटिक जे जो फील्ड रे ट्रेंड अछंती से एक्टिविटी रे तांको से ट्रेंड फैकल्टीज को असाइन करा जिवो ओवरसीज पे देन इंटीग्रेट एक्टिविटीज इनटू द एकेडमिक कैलेंडर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स integrate activity into the academic calendar to avoid conflicts तापरे कोन होला ना हमरो जो भी एक्टिविटीज हमरो होची ऑर्गेनाइज करा होची सेटा एकेडमिक कैलेंडर रे मेंशन हेतिबा दरकार जा फळ कि कॉन्फ्लिक्ट हबो नाही अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करि पारिबो जेंति गोटे पिला चाहुथबो स्पोर्ट्स रे पार्टिसिपेट करिया को किंतु सेठी देखिला को आउ गोटे इवेंट भी चलीची आउ अलगा म्यूजिक हे गला डांस हे गला सेठी भी से को करिकुलर एक्टिविटीज होची एट ए सेम टाइम तो सेठी कोन होबो तार कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होबो जदि से गोटे एकेडमिक कैलेंडर रे हमें सेटा मेंशन करि दबा एक्टिविटीज गुरा को तो सेटा और आउ जोटा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करछ सेटा अवॉइड करिबो देन मेंटेन रिकॉर्ड्स and evaluate the impact of each activities तापरे जो भी एक्टिविटीज होची तारो हमें रिकॉर्ड मेंटेन करी के रखिबा एंड इवैल्यूएट करबा तो सेटा होची
Then role of teacher in managing extension and co-curricular activities. It teachers role कौन रहिबो in managing extension and co-curricular activities. ना first होची planning and organizing. से first कौन करिबो ना plan and organize करिबो कि designing structured program and ensuring resource allocation. से फर्स्ट गोटे जितेबाला प्लान करिबो गोटे स्ट्रक्चर्ड वे रे गोटे सिस्टमैटिक वे रे प्रोग्राम टा केमिति आमे ऑर्गेनाइज करिबो तारो गोटे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम से डिजाइन करिबो एंड एंश्योरिंग रिसोर्स एलोकेशन को रिसोर्स कोठी कोठी लागिबो तारो से एलोकेट करिबो देन मोटिवेटिंग एंड एनकरेजिंग स्टूडेंट पिलामानक भितरे मोटिवेटिंग या एंथुसियाज्म एंड पार्टिसिपेशन एनकरेजमेंट ए सब जो स्किल अच्छी से गुडा को से फॉस्टरिंग करिवे मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन असेसिंग प्रोग्रेस एंड मेकिंग नेसेसरी इंप्रूवमेंट तापर जहाँ भी किसी काम दिया होची को-करिकुलर एक्टिविटीज या एक्सटेंशन एक्टिविटीज करा होची तार प्रोग्रेस केते बाट गला ताको असेस करिवे एंड किछि गोटे जदि इंप्रूवमेंट दरकार तो सेमानंकु improvement provide kori. Then collaborating with community members, establishing strong ties with the local organization and and stakeholders. Collaborating with community members को सहित collaboration भावरे ସେମାନେ କାମ କରିବେ establishing strong ties ତାଙ୍କର ଥିବ strong relationship ଥିବ with local organization and stakeholders. Then innovating and adapting, introducing new methodologies to enhance student engagement. तापर हेले इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर एक्सटेंशन एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज कौन कौन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कौन अच्छे आम टीचर तो रोल पढ़ले एवं इंस्टीट्यूशन माने जो कॉलेज रे हो कि हायर एजुकेशन रे हो यूनिवर्सिटी रे हो किसी एक्सटेंशन आउ को-करिकुलर एक्टिविटी से माने ऑर्गेनाइज करछंती तो से कॉलेज किंबा यूनिवर्सिटी तार इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की तार सपोर्ट कौन रहउचे तो फाइनेंशियल रिसोर्सेस फंडिंग फॉर प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉलेज ही फाइनेंशियल रिसोर्स प्रोवाइड करिवो से केमती करिवो ना से गवर्नमेंट रु आनिवो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एक्टिविटी एग्जीक्यूशन से एक्टिविटी पाई से माने गोटे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी गोटे क्रिएट करिवे देन कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स जो एक्टिविटी से माने कंडक्ट करिवे ता पई से माने को ट्रेनिंग दिया जिबा दरकार या ट्रेन थिबा दरकार स्टूडेंट्स मानक भी दिया जिबा दरकार देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पार्टनरशिप कोलैबोरेशन विथ एनजीओस एंड गवर्नमेंट एजेंसी जहाँ भी किसी करा होची तो से एक्टिविटी जिते ऑर्गेनाइज करा होची तो आमे कम्युनिटी पार्टनरशिप भी रखी परिबा जेंति कोलैबोरेशन विथ एनजीओस हे गला एंड गवर्नमेंट एजेंसी. नेक्स्ट होची timetable management for extension community centered and co-curricular activities. तापर अभी देखिबा कि एक्सटेंशन पई एक्सटेंशन एक्टिविटीज कम्युनिटी सेंटर्ड एक्टिविटीज एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज पई कोन कोन माने टाइम टेबल मैनेज हमें केमिति करि देन डेडिकेटेड टाइम एलोकेशन जोटा कि मु कहथले टिके समय परे कि एटलीस्ट 2 आवर्स पर वीक शुड बी असाइन फॉर एक्टिविटीज लाइक सोशली SUPW क्लब गेम्स म्यूजिक आर्ट कंपटीशन एटसेट्रा जदि भी आमे किछि गोटे एक्सटेंशन रिलेटेड हैला कि कम्युनिटी सेंटर्ड और को-करिकुलर रिलेटेड एक्टिविटीज रखिबा टाइम टेबल रे तो केमिति आमे मैनेज करबा तो आमे एटलीस्ट पर वीक 2 आवर्स सेटा असाइन करबा से कामटा को ओके एक्टिविटीज को लाइक SUPW हे गला क्लब्स हैला कि गेम्स हैला क्लब्स मींस डिफरेंट टाइप्स रो क्लब्स रोची जेमति कि आमे कहि परिबा आर्ट क्लब्स रोची साइंस क्लब रोची मैथ क्लब रोची तो सही भलिया तो गेम्स म्यूजिक एंड आर्ट कंपटीशन student participation students should be given a list of activities to choose from ensuring engagement based on their interest
स्टूडेंट पार्टिसिपेशन भी निहाती दरकार से चूज करिवो कि को एक्टिविटीज लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज रखा है से स्टूडेंट चूज करके से एंश्योरिंग एंगेजमेंट बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट then subject specific planning creative and activity based subject like आमे एमिति सब्जेक्ट किछि रखिबा कि जोटा कि पिला मानको बहुत इंटरेस्ट हबो जोटा कि सेटा यूजफुल हे परिबो हम टाइम टेबल रे जेंति कि लिटरेचर हेला आर्ट एंड क्राफ्ट हेला थिएटर हेला म्यूजिक हेला स्पोर्ट्स हेला डांस हेला तो ए सब पीरियड भी आमे रखि परिबो शुड हैव असाइन्ड पीरियड डेजिग्नेटेड पीरियड then proper facility utilization जेमति कि library sports and games period should be allocated separately to avoid overcrowding proper facility utilization means कि जदि हमको टाइम टेबल रे से पीरियड टा ओवरक्राउडिंग लागुची तो आमे सेटा को सेपरेट गोटे करि परिबा हला कि अलगा वीक रे हमें किछि गोटे टाइम बाहर करिकि से पीरियड टा को कंडक्ट करि परिबा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग टीचर्स all faculty members should be assigned activity periods regardless of their primary subject ताको जोटा तार बेसिक सब्जेक्ट अछि ताको छाडी की एस गुडा को पीरियड को भी असाइन करिबा को पड़िबो फैकल्टीज मन clear scheduling in the timetable the utilization of library laboratories playground and sports room should be systematically planned and across all levels next hoche institution program audit a program audit is a systematic evaluation process that helps institution assess their educational program identify strength and weakness and ensure continued relevance ऑडिट कौन पे करा जाए ना गोटे से माने गोटे सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन प्रोसेस करंती जोटा को आमे ऑडिट कहू इट हेल्प इंस्टीट्यूशन असेस से कौन कौन करंती ना इंस्टीट्यूशनल को असेस करंती इन देयर एजुकेशनल प्रोग्राम्स कौन कौन तार प्रोग्राम्स अछि एजुकेशनल then identify strength and weakness कौन strength and weakness अछि and ensure continued relevancy it involves gathering input from staff student parents and community representatives to diagnose issues and propose solutions then key step in the audit process audit process रे को step follow हुए ना first होची personal review निया जाए the institution's teacher leader conducts an initial assessment then stakeholder consultation staff and community members reflect on existing practices तापर stakeholder consultation means आउ जेते जोड़ा staff and members रहिले staff and member रहिले से मना होचन stakeholder consultation data collection information is gathered through survey interviews brainstorming and document analysis etc then content analysis the institution examines factor affecting its program तापर से देखिए कि context टा ठीक भाव रे होची कि नहीं the institution examine factors affect its program तापर देखिए factors considered in the audit को factors हमरो ऑडिट रे कंसीडर होची एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें देखिए सोशल चेंजेस भीतर होला हमरो इन्वॉल्विंग जॉब मार्केट्स जेंडर रोल एटसेट्रा देन एजुकेशनल पॉलिसीज भी हमरो केते गुडे काम रे एक्सटर्नल फैक्टर्स भाबरे से यूज होची जोटे करिकुलम अपडेट्स हेगला न्यू असेसमेंट मेथड्स हैला then content relevance then teacher support system and financial and institutional resource तबे इंटरनल फैक्टर्स रे देखिबा कि हमरो कोन कोन होची ना स्टूडेंट नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन parental aspiration faculty strength and weakness institutional values and ethos and physical and financial resources these are the internal factors considered in the audit conclusion extension community centered and co-curricular activities significantly contribute to the holistic development of students and communities
By strategically planning, organizing, and evaluating these programs, educational institution can bridge the gap between academic learning and social progress. जदि आमर ठीक भाव सिस्टमैटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग होइथिबो से प्रोग्राम गुडिक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन ब्रिज द गैप बिटवीन एकेडमिक लर्निंग एंड सोसाइटल प्रोग्रेस through dedicated efforts. Educators can foster an environment where knowledge is not just acquired but also applied for meaningful change. By integrating this initiative into mainstream education, institution can create a well-rounded and socially responsible student body capable of addressing real-world challenges with knowledge, empathy, and innovation. तापरे होची यूनिट 13 करिकुलम प्लानिंग. Curriculum planning is the foundation of effective teaching and learning in educational institution. Educational institution रे effective teaching learning process रे curriculum plan टा होची most important role play करूची. A well-structured curriculum ensures that students gain the necessary knowledge, skill, and values that contribute to their personal and professional growth. जदि आमे गोटे वेल स्ट्रक्चर्ड करिकुलम कथा जदि कहिबा से कोन कोन करूची ना curriculum ensures the students gain the necessary knowledge, skills, and values that contribute to their personal and professional growth. The curriculum is not just a set of courses, it encompasses teaching methodologies, learning environment, and assessment strategies. What are the learning outcomes? After going through this unit, you will be able to identify the different components of curriculum planning. हमको देखिबार अछि आइडेंटिफाई करिबार अछि कोन कोन हमरो करिकुलम प्लानिंग अछि कंपोनेंट अछि करिकुलम प्लानिंग पर to recognize and value the logic behind every different stage and step of curriculum planning. Then to compare the ideal situation in curriculum planning at the university education level with what is actually happening in India. Then to identify a certain basic principle that may improve the process of curriculum planning in university education. तापरे कहला कोन basic principles अच्छे जोटा कि curriculum planning in university education को improve करि पारिबे. First होची principles of curriculum design. आमे जेते बेले गोटे करिकुलम डिजाइन करूचे तारो केते गुडा प्रिंसिपल्स अछि ताको आमे देखिया को पडुची. So alignment with educational goal, the curriculum should reflect the institution's vision and mission. Curriculum first देखिबो कि institution रो vision and mission कोन अछि. Okay, से को goals पाई establish हेछि हबा को अच्छी करिकुलम जेंति के हमको बीएड पाई करिकुलम तयारी करिवार अछि तो फर्स्ट हमको बीएड लेवल रो इंस्टीट्यूशनल विजन एंड मिशन देखिवार अछि. Then inclusivity and accessibility, it should cater to diverse learning style and जेहेतु हमरो करिकुलम हमरो क्लासरूम रे डिफरेंट डाइवर्स लर्निंग स्टाइल रो पिला पढुछन्ती ताको आखे अगर रखी कि डाइवर्स लर्निंग स्टाइल एंड नीड्स रो पिला मानक पई कोन होची ना करिकुलम तयारी करा जाय.
Then flexibility and adaptability, the curriculum should evolve with advancement in knowledge and societal needs. Curriculum should evolve with advancement of knowledge and societal needs. Societal needs को भी बेस करके curriculum करा होचे. जेमति कि for example तम सिलेबस रे गोटे को करिकुलर एक्टिविटीज को रखा है कि एक्सटेंशन एक्टिविटीज को गोटे पार्ट रखा है करिकुलम रे कोन पय तो सेटा सोसाइटल नीड अछि सेटा न जानिले पिला से जिंस जानि परिबो नाही सोशल सोसाइटी रे कोन सोशल एविल्स अछि ता प्रति तार नॉलेज आसीबो नाही से जिंस जानिबा दरकार कोन कम्युनिटी सेंटर्ड एक्टिविटीज होची केमिति कम्युनिटी सेंटर्ड एक्टिविटीज रे हमें डिफरेंट सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करूचे तो से विषय भी जानिबा दरकार तो सेठी पे सोसाइटल नीड्स को बेस करके हमरो करिकुलम डिजाइन करा जाए ओके तो इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ए बैलेंस बिटवीन कंसेप्चुअल लर्निंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज क्रूशियल then assessment and evaluation methods to assess learning outcomes should be embedded with the curriculum design last रे तो आमे देखिबा जे assessment and evaluation करिके आमे जो curriculum design करिजे सेटा हमरो जोटा लर्निंग आउटकम्स अछि सेटा को असेस करूचे कि नाही नेक्स्ट होची लर्निंग आउटकम्स एंड देयर रोल इन करिकुलम प्लानिंग ए करिकुलम should define clear learning outcomes that students are expected to achieve. Learning outcomes can be categorized cognitive. जेमति कि तो तुम्हें मैंने भी जिते बड़े लेसन प्लान लिखुचो आमे cognitive based objectives लिखुचे then skill based लिखुचे affective based लिखुचे तो सही भलिया जिते बड़े आबे करिकुलम टा करिबा ताले हमको फर्स्ट देखिबार अछि cognitive outcomes knowledge and comprehension of subject सेटा को रखिया अछि पड़िबो skill based outcomes को सब्जेक्ट हमें रखिले जोटे कि प्रैक्टिकल सिनेरियो रे बहुत अप्लाई करि परिबा हमें इफेक्टिव आउटकम्स डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज एंड एथिकल कंस्टिट्यूशन ता सहित हमको डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज एंड एथिकल कंसीडरेशन रिलेटेड किछि सब्जेक्ट्स भी रखिया को पड़िबो करिकुलम प्लान then component of components of curriculum planning कौन components अच्छी curriculum planning रे curriculum planning करिया पे अब कौन components first दरकार curriculum content हमें curriculum रे कौन content रखिया सेटा first time decide करिया this includes core subjects electives and interdisciplinary courses then teaching methodology, strategies such as lecture, case study, project-based learning, interactive discussion. Then assessment method, को type रे हमें assessment करि परिबा exam, quizzes, peer evaluation, presentation, practical application, etc. Learning environment रे कौन रहबो ना infrastructure, technological tool and classroom setups. Then faculty training and development, teachers should be well equipped with pedagogical skills and subject expertise. Faculty training and development कौन रहेगा ना teachers should be well equipped with pedagogical skills and subject expertise. जो subjects रखा गला curriculum रे ता पई टीचर पाखरे pedagogical skill थिबा दरकार से subject प्रति तारो expertise या mastery थिबा दरकार then curriculum planning in higher education higher education curriculum planning differs from school level curriculum due to greater flexibility and specialization key aspect include हमें जदि हायर एजुकेशन कथा कहबा तो स्कूल एजुकेशन रो पूरा डिफरेंस अच्छी से ओके तो फर्स्ट आछि कोन तार की एस्पेक्ट कोन रहबो the student centered learning encouraging student to choose course based on interest on career goals जदि हमें स्कूल एजुकेशन कथा कहबा तो सेठी कोन होची हमको चूज करिया को मिलु नाही कि हमें को करियर चूज करबा स्कूल एजुकेशन रे 10th जाय
को करियर चूज करवा को कोर्स चूज करवा मैथ भल न लगे भी मैथ पढ़िया को पड़ो हिस्ट्री जोग्राफी भल न लगे भी पढ़िया को पड़ो कहीं किसी ऑप्शन ना किंतु हायर एजुकेशन रे हमको चूज करने पड़ुची ओके तो चूज कोर्स बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड कैरियर गोल आम आम कैरियर हिसाब रे गोल हिसाब रे आम चूज करवा एंड इंटरेस्ट हिसाब research oriented approach integration of current trend and development in various disciplines then international standard aligning with a global education framework such as bologna process ensuring student mobility and employability तापरे होचे गोल सेटिंग एंड ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन एंड करिकुलम डेवलपमेंट करिकुलम डेवलपमेंट पे कौन कौन हमरो गोल सेटिंग एंड ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन कौन रहइबो ना हमको स्मार्ट स्मार्ट होबा को पड़िबो ओके तो स्मार्ट रे कौन ना एस फॉर स्पेसिफिक क्लियरली डिफाइंड स्पेसिफिक डिफाइंड लर्निंग एक्सपेक्टेशन then measurable m for measurable sm outcomes that can be assessed जहाँ हमरो लर्निंग आउटकम्स अच्छी ताको हम असेस कर पारे then achievable r for achievable realistic and align with student capabilities okay then relevant addressing industry and social needs then relevant भी हेतिबा दरकार जोटा कि मु कहिथिले कि इंडस्ट्री बेस्ड हला कि सोसाइटल नीड हला ताको बेस करके रखिबार अछि then time bound within time period गोटे आमे टाइम पीरियड दबा कि ए टाइम पीरियड रे ही हमरो करिवार अछि ensuring timely completion and progression तापरे हला मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिजाइन को मॉडल आमे करिकुलम डिजाइन रे आमे यूज करि परिबो ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल लाइक सब्जेक्ट सेंटर्ड मॉडल organized around discipline means organized around disciplines means जैसे physics literature mathematics सब्जेक्ट सेंटर मॉडल रे आमे केवल डिसिप्लिन या सब्जेक्ट्स गला में रखिया then competency based model focus on skill mastery and hands on learning ए मॉडल टा भी हमें रखिबा जोटा कि हमें हमर जो स्किल मास्टरी फोकस करिवो एंड हैंड्स ऑन लर्निंग किछि एक्सपेरिमेंट हे गला से बेस्ड एक्सपेरिमेंट बेस्ड हला इंक्वायरी बेस्ड हला हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हला से भले हमें सब्जेक्ट रखिबा then process oriented model emphasizes cognitive development and learning process then problem based learning model encourages critical thinking and problem solving organization of educational experience हमारा जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस अच्छे हमें केमिति ऑर्गेनाइज करिवो the execution of curriculum is critical aspect of learning outcomes should determine the content and instructional strategies used key consideration include what will students know or understand once they have successfully completed this unit of study program or course student will know or understand once they have successfully completed this unit of study
स्टूडेंट जानिबा दरकार कि ए प्रोग्राम आउ कोर्स किंबा ए पर्टिकुलर गोटे सेशन या स्टडीज कंप्लीट हैला परे कोन हबो. What will they able to do with their knowledge or understanding when they have successfully completed the unit of study? तापरे ताकू अंडरस्टैंड करियर अछि नॉलेज और अंडरस्टैंड करिवो कोन ना when they have successfully completed the unit of study. Once the learning outcomes are in place, they will be assessed the completion of the course or program. The question to be addressed are थरे लर्निंग आउटकम्स हमरो अचीव हे गला तो they will be assessed at the completion of the course or program kon रहबो. Now what assessment task will the student have to complete to assure that the outcomes have been met? What assessment task and what assessment task will the students have to complete to assure the outcomes have been met? Then in what ways do these assessment tasks reflect the context in which student will be expected to use the knowledge, skill and attitude learned in this course or program? तापर देखिबा the scheme of studies include broad goals and learning outcomes determine the subject of the scheme of study that will form part of curriculum. Scheme te bhi nihati dorkar. Usually the courses or papers that will be offered in a particular discipline are first discussed in a department. First हमको देखियारो अछि कि course or paper रे that will be offered in a particular discipline that are discipline are first discussed in a department. Then in the board of studies of schools or faculties and the academic council. Then teachers play a two-part role in the curriculum planning. Teachers detail role play karibo two-part re curriculum planning de, one as a member of this body, secondly in the preparation of the basic draft of curricular content in their specific subject. Then scheme of study are designed on a scientific basis. जोटा हमरो scheme of studies रोज सेटा गोटे systematic way रे हबो. Then models of models of curriculum design कोन models रहइबो subject matter model, then competency based model. Subject matter रे केवल हमें subject को focus करिबा जेंति कि different types of discipline like science, humanities and engineering. Then competency based model like it focuses on skill acquisition through practical application. Then human traits model aims at personality development and value education. Then social function model, it addresses societal and community needs. Individual needs interest model, personalized learning based on student interest. आम जिते करिकुलम डिजाइन इंक्लूड करवा तैयारी करवा आमको यही सब मॉडल इंक्लूड करिवार अछि. A blended approach is often used to integrate multiple models to ensure a well-rounded educational experience. तापरे देखिबा करिकुलर एक्सपीरियंस रे. करिकुलर मीन्स करिकुलम. Curricular experience. Curriculum planning involves selecting and organizing curricular inputs, learning materials and experiences while considering key factors like scope, sequence, continuity, articulation, balance and transferability. First time देखिए scope. Scope defines the breadth and depth of educational experience, skills and values to be taught, balancing instructional time. आमको देखिबार अछि कि स्कोप रे आमे को भलिया माने आमे सब्जेक्ट्स रखिबा कोन से सब्जेक्ट्स रे कोन हमरो रहिबो ना हमरो एजुकेशनल एक्सपीरियंस आमे देखिबा स्किल्स वैल्यूज
and values to be taught को values पिलाउन को पढ़ा हबो instructional times केते रहइबो ए सब जिंस देखिया पड़ो स्कोप रे सीक्वेंस रे हमें गोटे सीक्वेंस साइंटिफिकली साइंटिफिक हिसाब रे सिस्टमैटिकली हमें सीक्वेंस हिसाब रे ताको रखिबा ऑर्डरली डिटरमाइंस द ऑर्डर एंड टाइमिंग ऑफ कंटेंट डिलीवरी अक्रॉस सेमेस्टर प्रत्येक सेमिस्टर रे कौन रहिबो को पेपर रखा जिवो को सब्जेक्ट्स रहिबो तार गोटे हमें सीक्वेंशियली ऑर्डर रे हमें सेटा क्रिएट करबो देन कंटिन्यूटी ensure progressive complexity through planned repetition continuity थिबा दरकार then articulation links learning experience throughout the program for coherence then balance maintains structure between subject and learner centered approach general and specialized education and diverse instructional techniques balance कौन ना balance maintain करके रखुची between subject and learner centered approach subject centered और learner centered approach रे general and special education रे and diverse instructional techniques then transferability भी निहाती दरकार ensure that learning is applicable to real life context then decision making in करिकुलम प्लानिंग एते सब जिंस आमे कले तो किए तो जने थिबे ना जे कि से डिसीजन मेकिंग नेबे करिकुलम प्लानिंग पई तो जनरल जे स्कूल टीचर से तो करिबे ना ताकर मेंबर अछंती करिकुलम प्लानर्स द की क्वेश्चन इन करिकुलम प्लानिंग इज हु मेक्स द क्रूशियल डिसीजन के क्रूशियल डिसीजन मींस के थियरी करे करिकुलम प्लानिंग this is particularly relevant in university education in India where curriculum related decisions are made by multiple academic bodies तो different bodies अच्छी जंती की board of studies of school faculties से मैंने भी करंती this is the first level where curriculum planning is discussed and approved then academic council को जाए तापरे this higher level body finalize curriculum related decisions based on recommendation from the board of studies then university department हो जाए ओके आगे बोर्ड ऑफ स्टडीज माने ताको फाइनल करिवे अप्रूव देबे तापर एकेडमिक काउंसिल को जिवो एकेडमिक काउंसिल रो आसीबो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट को इंडिविजुअल डिपार्टमेंट फर्स्ट डेलिबरेट ऑन द कोर्स and subjects preparing draft for before forwarding them the board of study and academic teachers role in curriculum planning टीचर्स रो कोन रोल रहुछि टीचर्स माने ही तो जने जने बोर्ड ऑफ स्टडी रो मेंबर अछंती एकेडमिक काउंसिल रे जो माने थांती टीचर्स माने ही थांती ओके तो टीचर्स रोल इन करिकुलम प्लानिंग कोन रहबो ना टीचर्स प्लेज ए क्रूशियल रोल इन करिकुलम प्लानिंग एट मल्टीपल लेवल्स एज ए मेंबर ऑफ एकेडमिक बॉडीज जोटा मु कहले कि से गोटे एकेडमिक बॉडीज रो मेंबर भी अछि टीचर्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एज मेंबर ऑफ द board of studies and academic council then they contribute their expertise to discussion on the structure and content of the course then as content developer से जने content developer भी अछि कोन teachers prepare draft of curriculum content for specific subject based on their subject expertise टीचर्स मानक भी दिया जाए करिकुलम प्लान करबा पई कि करिकुलम रे हमें कोन कंटेंट रखिबा कंटेंट मीन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट पई कोन कंटेंट रहइबो कंटेंट रे कोन सब कंटेंट रहइबो ए सब जिंस ओके they ensure that the curriculum align with learning objectives disciplinary advancement and societal need से जो कंटेंट रखिबो केमिति कंटेंट रखिबो से ना से करिकुलम अलाइन विथ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करिवो डिसिप्लिनरी एडवांसमेंट देखिबो देन सोसाइटल नीड्स देखिबो then as a curriculum implementers beyond planning teachers are responsible for actual delivery transaction of the curriculum in classroom से करिकुलम इम्प्लीमेंटर्स भी
कौन ना टीचर्स आर responsible for actual delivery or transaction of the curriculum in classroom. They adapt suitable teaching methodologies, instructional material, teaching learning material ହେଇଗଲା and assessment techniques to ensure effect learning. As an evaluator also, teachers plays a key role in assessing curriculum effectiveness by monitoring student performance and engagement. Then they provide feedback that helps refine and improve the curriculum over time. तापरे कोन दे प्रोवाइड फीडबैक तापरे इवैल्यूएटर हिसाब रे से फीडबैक प्रोवाइड करिवो दे हेल्प रिफाइन एंड इंप्रूव द करिकुलम ओवर टाइम. Role of the national and state level bodies in curriculum development. तापरे हमें देखिबा कि करिकुलम डेवलपमेंट पई नेशनल एंड स्टेट लेवल बॉडीज रो कोन रोल अछि. Curriculum planning at the university level must align with policy decisions set by national and state bodies. National Council of Higher Education (NCHE) bridge the gap between different curriculum planning agencies in professional and non-professional fields. ସେମାନେ ଦେଖିବେ कि curriculum planning agency ସେମାନେ ଦେଖିବେ कि कौन कौन gap create करूची professional and non-professional field भितरे. Ensure policies coordination, promotes interdisciplinary approach, encourage research, support course restructuring. Then UGC-led curriculum development must conform to NCHE policy, making NCHE decision highly influential in higher education. Then State Council of Higher Education कौन करिबा ना similar to National Council of Higher Education but operates at the state level. Focuses on future educational development, updating curricula and planning based on socio-economic and academic needs. तापरे maintain and coordinate academic standard in alignment with the UGC policy. तापर थर्ड होची नेशनल लेवल स्टैट्यूटरी बॉडी एमाने भी करिवे को काम करिवे को फील्ड रे जेंति कि टेक्निकल पई एआईसीटी हे गला, एग्रीकल्चर पई आईसीआर हैला, मेडिकल रिसर्च पई आईसीएमआर, देन मेडिकल एजुकेशन पई आईएमसी एंड टीचर एजुकेशन पई एनसीटी. तापर चैलेंजेस इन करिकुलम प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग आमे जते बेले करिकुलम को प्लान करूचे एंड ताको जते बेले इंप्लीमेंट करबा कोन कोन प्रॉब्लम्स फेस होछ. Resistance to change. Traditional educational model often resistance to innovation. Means सांगे सांगे हटात आमे गोटे कल्चर टाकू माने मीन्स जोटा हमरो वर्क कल्चर अछि, ट्रेडिशनल एजुकेशन अछि, ताको जदि हटात आमे चेंज करी कि मॉडर्न जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आमे आनी दबा तो सेटा टिके प्रॉब्लम्स हबो. तो रेजिस्टेंस टू चेंज. रिसोर्स कंस्ट्रेंट हम पाखरे बहुत सारा लैक ऑफ फंडिंग रहउची. टेक्नोलॉजी फंडिंग फॉर टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रोची, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स रोची जहा फल के आमे हमर रिसोर्स कंस्ट्रेंट हबो. देन मिसमैच विथ इंडस्ट्री नीड, गैप्स बिटवीन एकेडमिक करिकुलम एंड जॉब मार्केट रिक्वायरमेंट्स. असेसमेंट गैप. ट्रेडिशनली evaluation method may not accurately measurable competency. Continuous curriculum evaluation and improvement. Curriculum planning is an evolving process. Institutions should conduct periodic reviews and update, incorporate feedback from students, faculty, and industry experts, then utilize technology of curriculum enhancement and emphasize interdisciplinary and experiential learning. माने कौन ना कंटिन्यूस करिकुलम इवैल्यूएशन हमें केते बेले करबा, इंप्रूवमेंट केते बेले करबा. फर्स्ट हमें करिकुलम प्लान हमें करथिले, देन इंस्टीट्यूट को पठायला, इंस्टीट्यूशन ते कोन करबो, पीरियोडिक रिव्यूज करबो, अपडेट करबो, देन फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट, फैकल्टी एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट टू फीडबैक नबो. तापरे देखिबो कि सेतरे हमें कोन टेक्नोलॉजी हमें यूज करि परिबा, कला परे जाय कि से ताको पुणे आउथरे रिवाइज करबो. देन केस स्टडी एटा गोटे देछि. तापरे नेक्स्ट होची प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ द करिकुलम प्लानिंग प्रोसेस. कोन कोन हमर प्रोफेशनलाइजेशन रोचे ना इंस्टीट्यूशनल ऑफ करिकुलम प्लानिंग. तापरे मेकिंग करिकुलम रेस्पॉन्सिव,
then validation and quality assurance. Then conclusion, curriculum planning is a fundamental pillar of education that shapes student success and institutional reputation. University must continually adapt to emerging trends, technological advancement, and societal needs to maintain educational excellence. Through strategic curriculum design, higher education institution can foster critical thinking, problem-solving abilities, and lifelong learning students. तापर देखिबा curriculum development. Curriculum development is a structured process that ensures education remains relevant and effective. Curriculum planning olga, curriculum development olga. Okay. So Ralph Taylor's model of curriculum development, known as means and model, focus on 4 key questions. Ralph Taylor jone hochhanti curriculumist. Se तांकर गोटे मॉडल रे से करथले से गोटे तांकर टाइलर मॉडल अछि तो सेही मॉडल रे से चारटा क्वेश्चन तांकर इंपोर्टेंट अछि फोकस करथले व्हाट आर वर्थ व्हाइल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कोन कोन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स रहिबो व्हाट एक्टिविटीज विल अचीव दिस एक्टिव ऑब्जेक्टिव्स जो आमे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स रखिले से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आमे को एक्टिविटीज द्वारा ताको अचीव करि परिबा हाउ शुड द एक्टिविटीज बी ऑर्गेनाइज आमे से एक्टिविटीज को केमिति ऑर्गेनाइज करिबा एंड हाउ विल सक्सेस बी मेजर्ड आमे केमिति how will success be measured means आमे केमिति हमरो लर्निंग आउटकम्स की आमे जो सक्सेस आमे हेचे जते बेला आमे गोटे करिकुलम डेवलपमेंट तयारी करछे सेटा सक्सेसफुल होउची कि न होउची आमे केमिति ताको मेजर कर learning outcomes understand the stage and step in development steps involved in curriculum design. Then examine curriculum development practices in Indian university. Then appreciate the roles of academic bodies in curriculum planning. Specify course objectives effectively. Then analyze course outlines and develop a process for validating curriculum material. Steps in curriculum development. First step होचे हमरो कोन ना goal specification. Curriculum development follows a systematic process to ensure educational goals are met. The key step includes goal specification, identify and specify instructional objectives based on student needs, societal requirement and subject discipline. First हमको goal specification करिवार अछि जेतेबेले हम गोटे करिकुलम टाको डेवलप करिवु फॉर एग्जांपल किछि गोटे एंट्रेंस एग्जाम होची एसएसबी रो एग्जाम हैला एसएसबी एजुकेशन तो तापे से माने गोटे करिकुलम डेवलपमेंट करिवे तो फर्स्ट से माने गोटे गोल स्पेसिफिकेशन रखिबे कि ऑब्जेक्टिव्स रखिबे कि हमें एसएसबी करिबा +3 लेवल रो तांको माने से माने कॉलेज रे अपॉइंटमेंट पाइबे टीचर्स माने तो हमें सेमानको भलिया माने सेमाने जेमति से पिला को पढेइबे तो तांको हिसाब रे आमे जो स्टूडेंट्स मानकर नीड सोसाइटल रिक्वायरमेंट और सब्जेक्ट डिसिप्लिन हिसाब रे आमे ऑब्जेक्टिव्स आगे फाइंड आउट करिबा ऑब्जेक्टिव्स डिफर बाय एजुकेशन लेवल जोटा कि हेडी कुहाइची अंडर ग्रेजुएट फोकसेस ऑन फाउंडेशनल नॉलेज व्हाइल पोस्ट ग्रेजुएट एम्फसाइज एप्लीकेशन एंड एनालिसिस देन स्टेप 2 तापरे हमें गोल हे गला कि हमें एसएसबी करूचे एसएसबी एग्जाम करिबा तो सेटा हमर गोल रहला ओके तापरे प्लानिंग कोन कोन हमें एजुकेशन एग्जाम करिबा एसएसबी रो कोन कोन ता भीतर हमें कंटेंट रखिबा outline scope content sequence and non teaching learning strategies then identify appropriate teaching materials कोन कोन रहिबो टेक्स्ट बुक रेफरेंस मटेरियल डिजिटल रिसोर्सेज etc तापर validation
ओके तापरे इवैल्यूएशन बाय एक्सपर्ट बॉडीज इंश्योर द करिकुलम मीट्स एकेडमिक स्टैंडर्ड आमे कर सला पर ताको वैलिडेट पे आमे पठेइबा देन फील्ड टेस्टिंग तापरे आमे ताको फील्ड टेस्टिंग करबा कि सेटा क्लासरूम में जाई कंडक्ट करबा कि सेटा होची कि नै पिला केते मार्क्स रखुचंदी देन इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल जदि किछि गोटे हमर सेते चेंजेस हमर आसुची देन चेंजेस बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन करबा देन डिफाइन द करिकुलम एंड अडॉप्ट इट ऑन ए लार्जर स्केल then role of objectives in curriculum design curriculum design रे हमरो कोन कोन ऑब्जेक्टिव्स रो रोल रोची रोल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन करिकुलम डिजाइन instructional objectives provide broad guidelines for content selection time allocation credit assignment and learning outcomes then undergraduate courses aim at foundational knowledge while postgraduate courses emphasizes analysis and application जदि हमें undergraduate कथा कहबा just हमें गोटे फाउंडेशनल नॉलेज उपरे हमरो गोटे रहउची while postgraduate courses emphasize analysis and applicable application. However, in Indian university, instructional objectives are often left to individual teachers and examiners. Next, mechanics of curriculum development. Curriculum development is a collaborative process involving teachers, students, administrators, experts, and community. Key concerns include how universities manage collective decision making. को मेकानिक्स को मेकानिज्म रे आमे करिकुलम डेवलपमेंट करि परिबा दीटा रोल अछि गोटे होची यूनिवर्सिटी मैनेज कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड रोल ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स decision making in university that means university follows different curriculum framework while broad structures remain stable course content must evolve with advancing knowledge the board of studies plays a critical role by evaluating course proposal and making recommendation to the faculty which includes interdisciplinary members such as educationists and interns. So decision making in university re board of study ro बहुत crucial role play रहुची by evaluating course proposal pai and making recommendation to the faculties. तापर देखिबा करिकुलम डेवलपमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज कहार कोन कोन रेस्पॉन्सिबिलिटीज रोची जेमति कि हमें देखिबा कि कोर्स फॉर्मुलेशन पाई सब्जेक्ट टीचर्स एंड एक्सपर्ट्स रो रेस्पॉन्सिबिलिटीज दरकार जेतेबेले हमें कोर्स गोटे करूचे तयारी करूचे देन डिसिप्लिनरी रिव्यू कोर्स भितरे कोन कोन डिसिप्लिन हमें रखिबा तारो के रिव्यू करिवे बोर्ड ऑफ स्टडीज then interdisciplinary evaluation किए करिवे then faculty then policy consideration किए करिवे कोन कोन policies rules regulation रहइबो सेटा academic council however challenges remain do formal bodies incorporate student needs are teachers adequately represent in decision making are this body effective in maintaining curriculum quality it is सबु बेले पे हम पे गोटे challenges रहे कि do formal bodies incorporate students in कोन formal bodies students need to incorporate करि परिबे are teachers adequately represented in decision making or are these bodies effective in maintaining curriculum quality so autonomy in curriculum design greater autonomy for institutions and teachers can foster innovation, but a balance is needed. Curriculum design रे भी हमको autonomy निहाती दरकार
The university grant or UGC promotes autonomous colleges which can design their own courses and conduct exams through university still our degree. ସେଥିପାଇଁ यूनिवर्सिटी कौन करे ना यूनिवर्सिटी जो यूजीसी से कौन प्रमोट्स कला ना ऑटोनोमस कॉलेज प्रमोट्स कला जे कि से तार कोर्स निजे ही तैयारी करिवो निजे डिजाइन करिवो निजे एग्जाम कंडक्ट करिवो दो यूनिवर्सिटी स्टिल आवर डिग्री. However, teacher freedom remains limited as autonomy is institution wide rather than individual. Then developing course objectives and outlines. Although universities provide curricula, teachers must define objectives to ensure clarity in teaching and assessment. This involves clearly defining course objectives. First हमको course objectives जहाँ भी अच्छी सेटा clearly define होबाकू पड़िबो. Indicating expected student learning outcomes. तापरे तारो कौन learning outcomes बाहरिबो. Ensuring consistency in examination expectation. तापरे key implication. Teacher analyze students' needs and learning condition. Authorities provide necessary teaching resources. Then teachers have a preference for self-assessment. Then standardized evaluation ensure fairness. तापरे specification of weightage. आमे जो भी कोर्स करिकुलम प्लान करूचे ता पाए आमे को एरिया पाई आमे केते वेटेज दबा. Weightage is assigned based on time allocation. Available time determines content depth. आमे जो टाइम को अलर्ट करिबा सेटा देखिबा कि कंटेंट केते माने सेतर कंटेंट केते अछि. Content depth then activities. Field work, self study, classroom teaching must align with objectives. तापर आमे देखिया कोन कोन एक्टिविटीज आमे सेतर रखि परिबा. Then credits. Define the importance of different courses and assessment strategies. Credit कोटे कोटे रहउची केते क्रेडिट आमे देई परिबा. Okay. Teachers must balance time, methodology and assessment to achieve course objectives effectively. Next होची assessment and evaluation in curriculum development. आमे एते सब जिंस कर सारला पारे तापरे आमे curriculum development को assess and evaluation केमति करिबा ना. Assessment must be integrated into curriculum design. Common evaluation methods, written test, project assessment, practical evaluation, group discussion ए हिसाब रे आमे assessment and evaluation करि परिबो. तापरे होची the role of teachers in curriculum planning. Teachers रो कोन कोन रोल रहबो curriculum planning रे
ना एज ए कंट्रीब्यूटर और टू एकेडमिक बॉडीज से जने कंट्रीब्यूटर रही परिबो एकेडमिक बॉडीज रो teachers participate in the board of studies academic council and university faculties ensuring the curriculum remains updated as a developer of course content जदि किसी से content को develop करूची गोटे subject रे किसी गोटे content अछि ताको से develop करूची तो तामे ताको as a developer भी कहि परिबा teacher create subject specific content align it with objectives and select teaching learning materials method as implementers and evaluators teachers plays a ଆମେ ତାକୁ implementers and evaluators भी କହିପାରିବା teachers plays a crucial role in delivering curriculum content assessing student and providing feedback for continuous improvement silent features of continuous comprehensive evaluation जोटा कि हमें CCE कहूचे is a systematic and ongoing process that assess students academic and non-academic development. It aims to reduce stress, provide better learning opportunities and ensure holistic development. First होची regular and ongoing process. कले हमें जानी परिबा जे कोन पिल्लार गोटे CC केमती अछि. Assessment is not a one time event but a continuous process. Assessment की evaluation हमें जो परीक्षाटा करूचे सेटा one time होने से it is a continuous ongoing process. Conducted at regular interval to track students progress strength and weakness हमें different type रो student progress जानिया पई different type रो हमें exam करू formative evaluation हे गला during the session or teaching learning process and identify the strength and weakness of the students सेटा करू जेतेबेले हमें summative evaluation करू at the end of the course करू जोटा कि हमें annual exam कहू helps reduce unnecessary academic pressure and improves conceptual clarity and application of learning. Then focus on holistic development. CCE evaluates not only academic knowledge but also the overall development of students including health, interest and characters. Holistic development आमे जेतोल देखिवा कि केवल जे तार academic knowledge को evaluate करूची से जिनस नुह तार all round development को करूची तार health हे गेला interest हे गेला character हेला physical emotional social इस वो field रे भी से evaluate करूची तो emphasizes skills such as problem solving decision making communication and social relationship also evaluate. Next, use of multiple assessment tools and techniques, different types of tools and techniques use hochi. Assessment jitebale ame koruche. Variety of assessment methods are used to ensure fair and unbiased judgment of student progress. Teachers collect evidence from multiple sources to provide a comprehensive understanding of student development. टीचर्स भी बहुत सारा सोर्स से कलेक्ट करूची जेमती एनेक्डोटल रिकॉर्ड हे गला पोर्टफोलियो हेला रुब्रिक्स हेला सेथरो भी से एसेस करि परिबो activities and procedures are selected to promote balanced growth in student then involvement of stakeholders से माने भी करंती केमती ना peers teachers parents and school staff play an active role in the evaluation process. Similarly, evaluation process active role play करंती communication and orientation session helps stakeholders understand their roles in supporting students. যদি আমি टीचर्स पेरेंट्स या स्कूल स्टाफ कथा कहबा जेतेबेले पेरेंट्स कथा कहूचे कि ସେମାନେ କେମିତି ଇଭାଲୁଏସନ ପ୍ରୋसेस ରେ ଆକ୍ଟିଭ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି गोटे पीटीए मीटिंग हुए तो ସେଇଥିରେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆର ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍स ରହୁଛି ସେମାନେ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ସେମାନେ ସେଇ ମିଟିଂ ରେ କୁହନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଛୁଆର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଏଇ ଫିଲ୍ଡ ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଦରକାର तो से जिनसटा कहती देन स्कूल स्टाफ भी also play an active role okay peers माने भी करती continuous monitoring and feedback CCE identifies learning gaps provides timely feedback and implements corrective measure retesting ensures that students overcome weakness and improve learning outcomes. Then comprehensive learning assessment evaluation goes beyond academics and includes personality and
attitude development. Comprehensive learning assessment रे केमती होबो ना evaluation goes beyond academic and includes personality and attitude development. Participation in co-curricular activities, sports, केते गुडा co-curricular activities से माने participate करिवे जेमति sports हेगला games हेगला is an essential part of the assessment. Then primary focus is on students improvement rather than just passing or failing judgment. Then stage of curriculum development. कौन कौन curriculum development रे stage अच्छी. First stage होची specification of the scope and content of instruction. First हमें देखिबा कि specification of scope and content कौन आमर रहइबा. Then writing content outlines हमें गोटे content outlines गोटे करिबा. Then specification of the relative weightage for the different content items within a course in terms of instructional time allocation. तापरे से कंटेंट और कोर्स पाई आमे केते टाइम रखिबा सेटा भी गोटे आमे इंस्ट्रक्शनल टाइम को एलोकेट कर दबा. देन step 4 selection of teaching learning strategies such as classroom teaching, practical demonstration, field work, self study, library work, tutorial seminars, group discussion ए सब जिंस भी आमे रखिबा टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज रे. देन स्टेप 5 रोची डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कौन कौन रहिबो. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीडिंग एंड रेफरेंस मटेरियल भी दरकार. देन स्पेसिफिकेशन ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस. देन की कांसेप्ट इन कंटिन्यूअस comprehensive evaluation. Integration. Consider evaluation as an integral part of teaching learning process and not merely at the end of the course activity. Then continuity आमर continuous comprehensive evaluation रे continuity भी थिबा दरकार जोटा कि आमे आगुरु पढिचे. It is a ongoing process and continuous process. Undertake as frequently as possible as assessment of students learning to remain in constant touch with the development and growth of students. Comprehensiveness include both scholastic areas for assessment of total development of the students using testing and non-testing techniques of evaluation. Then cooperation involves other teachers, students, peers, observer, and even community members in assessment and judgment making for more dependable evidence. Cooperation भी निहाती दरकार. Then criteria and reference हमें गोटे criteria set करिबा. Then diagnosis analyze all evidence gathered about students to identify inadequacies in student learning to provide the basis for remedial measure. Then feedback, use of test result and other evidence for reinforcement and improvement of student learning as well as instructional strategy. Then reading and reference material कौन कौन रहिबो ना. हायर एजुकेशन डिमांड्स सेल्फ स्टडी रिक्वायरिंग. हायर एजुकेशन जो माने थांती हायर एजुकेशन स्टूडेंट माने से डिमांड करे कि हायर एजुकेशन डिमांड करे कि ताको स्टूडेंट को से सेल्फ स्टडी करेबो. रिक्वायरिंग रिलेवेंट एंड accessible reading materials. Then Indian universities often lack of standardized textbook, forcing student to rely on classroom lecture. ओके तो किंतु इंडियन यूनिवर्सिटी कौन करे ना तार लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेक्स्ट बुक नहीं. से क्लासरूम लेक्चर्स को बेसी फोर्स करे कि पिला को बेसी जोटा कि आमे अटेंडेंस सिस्टम टा कहूचे से बेसी फोर्स करे कौन क्लासरूम लेक्चर पे. एंड इंस्टीट्यूशन मस्ट एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल रेफरेंस बुक. इंस्टीट्यूशन को दरकार कि जो भी किछि भी कंटेंट कराई किछि भी सब्जेक्ट्स कराई जो करिकुलम टा रखा है तार रेफरेंस मटेरियल अवेलेबिलिटी थिबा दरकार. इंक्लूजन ऑफ कंटेम्पररी रिसर्च मटेरियल तार रिलेटेड किछि रिसर्च मटेरियल भी दरकार एंड मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस थिबा दरकार. ओके तो डेवलपमेंटल ट्राई-आउट एंड करिकुलम रिन्यूअल. Curriculum must be tested in real classroom before implementation.
जितेबले किछि भी गोटे आमे करिकुलम प्लान जितेबले तैयारी करूची गवर्नमेंट या बोर्ड ऑफ स्टडीज फर्स्ट से गोटे ट्राई आउट टेस्ट करूची ओके गोटे से रियल क्लासरूम रे जाई कि सेटा करा होची जितेबले एनईबी 2020 इम्प्लीमेंट हेई नथिला सेतेबेले से बहुत सारे एजुकेशनिस्ट मानन को भी कहिथिला कि तुमे माने ओपिनियन दियो स्टूडेंट्स मानन को भी पचारथिला तुम माने ओपिनियन दियो ओके से ओपिनियन देला पोरे से ताकू किछि मॉडिफाई कला करिकि से ताकू इम्प्लीमेंट कला तो सेमिति किछि गोटे करिकुलम हम जेतेबेले तैयारी करूचे फर्स्ट सेटा रियल क्लासरूम रे बिफोर इम्प्लीमेंटेशन टेस्ट करा होची key factors in development tryouts student needs and aspiration availability of institutional resources teachers qualification and capabilities proper weightage to different curriculum component so many university lack a formal tryout process leading to rigidity and dissatisfaction among teachers and students. Then institutionalization of curriculum renewal. A dynamic curriculum must evolve continuously based on advancing knowledge in various fields. Institutionalization of curriculum renewal रे कौन रहबो ना फर्स्ट से कहला advancing knowledge in various field रे तेको advance knowledge तेको create करिवार अछि then changing student रो needs को भी change करिवार अछि evolving societal expectation a structured feedback system should collected data from student teacher and stakeholder to refine the curriculum जेतेबेले आमे चाहूचे कि curriculum को renewal करिया पय या refine करिवा पय तो गुटे structured feedback system आमे रखिबा से थ्रू आमे गोटे डेटा कलेक्ट करिबा कोठू ना स्टूडेंट टीचर एंड स्टेक होल्डर्स टू डिफाइन द करिकुलम करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल जोटा कि एबे हमें जस्ट आगु पढ़ी थिले कि फर्स्ट टाइम जेतेले करिकुलम तयारी करूचे तार कोन कोन आमे स्टेप देखिबा ना करिकुलम आल्सो वन टाइप ऑफ साइक्लिकल अप्रोच फर्स्ट टाइम नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई कर देले then develop curriculum components कौन कौन ता भितरे components या elements रहिबो सेटा को हम डेवलप करले then pilot test करिबा try out basis रे real classroom रे then evaluate and refine जदि किछि सेथरे चेंजेस अछि मॉडिफिकेशन अछि then सेटा को change and modify करिबा then आउथे ताको refine करिबा then implement and disseminate ताको implement करिबा जो क्लास पे जहा करिकुलम दरकार सेटो का हमें implement कले and disseminate कले distribute कले then conclusion in this unit highlights the process of curriculum development emphasizing setting objectives selecting learning activities assigning weightage to content and evaluating student performance the quality of curriculum depends on the teacher participation हमें जेतेबेले गोटे करिकुलम कथा कहूचे करिकुलम रो क्वालिटी टा केतेबेले जणा पड़िबो जेतेबेले टीचर पार्टिसिपेशन सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन एंड कंटीन्यूअस रिवीजन थिबो इन यूनिवर्सिटी शुड institutionalize curriculum renewal to ensure relevance and effectiveness in higher education so university should institutionalize curriculum renewal to ensure relevance यूनिवर्सिटी पाखरे एतिके तार पावर थिबा दरकार जे से करिकुलम को रिन्यूअल करिवो एंड को बेसिस रे रिलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस इन हायर एजुकेशन बेसिस रे ओके तो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लॉक 4 तमरा सरी जाईची आ मात्र केतेटा थिला 14 15 ना 12 13 14 15 13 14 15 16 तमरा थिला ब्लॉक 4 रे 30 यूनिट 13 14 15 16 तो आज आमे 13 14 आमे पढीचे नेक्स्ट क्लास काली अछि डेटा यूनिट सरी जो 15 एंड 16 ओके काली आमे पढिबा करिकुलम ट्रांजैक्शन
তাহলে এইଠି wind up କରିବା। Yes, ma'am. Okay, thank you. Thank you, Two ma'am. things, हाँ।